Ministers, distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen, I welcome you to this ceremony where we shall witness some shining examples of India-Jamaica bilateral cooperation. These are by way of exchange of memoranda of understanding followed by press statement by our two leaders. First, we shall witness the exchange of memorandum of understanding between the Government of Republic of India acting through the Ministry of Electronics and Information Technology and the Government of Jamaica acting through the Office of the Prime Minister of Jamaica on cooperation in the field of sharing successful digital public infrastructure aimed at promoting financial inclusion and social and economic transformation. This will be exchanged on the Jamaican side by Honorable Dana Morris Dixon, Minister in the Office of Prime Minister, and on the Indian side by Shri Pankaj Chaudhary, Minister of State in the Ministry of Finance. Next, we have the exchange of Memorandum of Understanding between NPCI International Payments Limited and eGov Jamaica Limited. Again, the two ministers, please. Thank you, Minister. Next, we shall have the exchange of Memorandum of Understanding on the Cultural Exchange Program between the Government of Republic of India and the Government of Jamaica for the years 2024-2029. This will be exchanged on the Jamaican side by Honorable Kamina Johnson-Smith, Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade, on the Indian side by Shri Pankaj Chaudhary, Minister of State, Minister of Finance. And lastly, we have the exchange of Memorandum of Understanding on cooperation in sports between the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and the Ministry of Culture, Gender, Entertainment and Sports, Government of Jamaica. Again, the two ministers, please. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I will now request spokesperson of Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Namaskar, good afternoon, Your Excellency, Dr. the Most Honorable Andrew Holness, ONPCMP, Prime Minister of Jamaica, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Ministers and members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to give his remarks to the media. Your Excellency, प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री होलनेस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज पहली बार जमैका के प्रधानमंत्री की भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं, इसलिए हम इस यात्रा को विशेष महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री होलनेस लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं। मुझे कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने उनके विचारों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को महसूस किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियन क्षेत्र के साथ हमारे एंगेजमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। फ्रेंड्स, भारत और जमैका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर आधारित है। 4 C's हमारे संबंधों को अंकित करते हैं: कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की।
भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हो रही है। जमैका की विकास यात्रा में भारत सदैव एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। इस दिशा में हमारे सभी प्रयास जमैका के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से हमने जमैका के लोगों के स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योग, बायोफ्यूल, इनोवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में हम अपना अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत द्वारा जमैका की सेना की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म हमारी साझा चुनौतियां हैं। हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने पर सहमत हैं। स्पेस सेक्टर में भी हमें अपना सफल अनुभव जमैका के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। हम मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। भारत और जमैका एक मत है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सहित सभी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। इन्हें समकालीन रूप देने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जमैका के बीच भले ही विशाल महासागरों की दूरी हो, किंतु हमारे मन, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास एक दूसरे से जुड़े हैं। लगभग 180 वर्ष पहले भारत से जो लोग जमैका गए थे, उन्होंने हमारे पीपल टू पीपल टाइज की मजबूत नींव रखी थी। आज जमैका को अपना घर मानने वाले लगभग 70,000 भारतीय मूल के लोग हमारी साझा विरासत का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनकी देखरेख के लिए मैं प्रधानमंत्री होलनेस और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार भारत से योग, बॉलीवुड और फोक म्यूजिक को जमैका ने अपनाया गया है, उसी तरह जमैका के रेगे और डांस हॉल भी भारत में पॉपुलर हो रहे हैं। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। हमने दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। यह सड़क भावी पीढ़ियों के लिए हमारी गहरी मित्रता और हमारे सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। क्रिकेट प्रेमी देशों के रूप में स्पोर्ट्स हमारे संबंधों में एक बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण कनेक्टिंग लिंक रहा है। कर्टनी वॉल्स की लेजेंडरी फास्ट बॉलिंग हो या क्रिस गेल की धुआंधार बल्लेबाजी, भारत के लोगों में जमैका के क्रिकेटर्स के लिए विशेष लगाव रहा है। हमने स्पोर्ट्स में अपना सहयोग और गहरा करने पर भी विचार विमर्श किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की चर्चाओं से निकले आउटकम्स हमारे संबंधों को उसेन बोल्ट से भी तेज गति देंगे और हम निरंतर नई ऊंचाइयां छूते रहेंगे। एक्सेलेंसी,
एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency Dr. the Most Honorable Andrew Holness, ONPC MP, Prime Minister of Jamaica, to give his remarks to the media. Your Excellency, Narendra Modi, Prime Minister of India, members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen, namaskar. Let me begin by thanking the Government of India for the warm welcome and the hospitality extended to me and my delegation on this, my first visit to India. Jamaica values the strong fraternal ties with India since our independence. Our relationship, however, predates the formal establishment of diplomatic ties, as Indian migrants came to Jamaica in the 1800s at a crucial juncture in the economic history of Jamaica. Almost 2 centuries now, Indians have made their mark in Jamaica, contributing to our country's development in various spheres, including health, education, information technology, and business. Their contribution to Jamaica's rich cultural heritage is also evident in our cuisine, music, and dance. In recognition of this, we celebrate Indian Heritage Day annually on the 10th of May to commemorate the arrival of the first Indians in 1845. Our strong people-to-people exchanges over the decades form the backdrop for our bilateral engagement today. Having had very fruitful talks with Prime Minister Modi, I can say with confidence that today heralds a new phase in Jamaica-India bilateral relations. Our discussions touched a range of issues of mutual interest, including health, agriculture, digital transformation, film, education, sports, tourism, and many other subjects. While we have largely recovered from the COVID-19 pandemic, I must convey on behalf of the government and people of Jamaica our sincere gratitude to the government and people of India for the tremendous support provided to us during our time of need as part of your vaccine friendship scheme. We are immensely grateful that we could count on India as a true friend and partner during those difficult times. As Jamaica continues its development journey, we must urgently build our human capital to ensure that we can thrive and succeed in a technology-driven world. We are therefore grateful for the scholarships and high-quality training provided by the Government of India under the ITEC program, from which hundreds of Jamaican nationals have benefited over the years. As India positions itself as the knowledge capital of the world, we recognize the remarkable strides made by your government in STEM education and digitalization. We therefore look forward to learn from India as a beacon of technological advancement in the global south, as the government of Jamaica seeks to equip itself and its people with the relevant skills to navigate
this changing and dynamic world. We are working to take the same innovative approach to development of our agricultural sector as we seek to work with India to share knowledge and best practices in critical areas such as mechanization, affordable irrigation, advanced seed technologies, and expertise in crop development, agro-processing, as well as investments and facilitation for credit support. In light of my administration's effort to enhance the safety and security of our citizens with a focus on strengthening the national security infrastructure and enhancing border security, we see India, a global leader in technology-driven security solutions, as a natural ally. As the world's fastest growing economy, energy security is of paramount importance to India. And likewise, as a small developing state, which are susceptible to external shocks, Jamaica's development is inextricably connected to its energy security. Our shared interests, premised on our respective national targets by 2030, provide a platform for deeper cooperation in this sphere. I am therefore pleased to announce Jamaica's intention to join the Global Biofuels Alliance pioneered by the Government of India. Jamaica is uniquely vulnerable to the impacts of climate change and therefore regards any effort to deal with this existential threat as worthy of support and commendation. For this reason, Jamaica is proud to have been invited by Prime Minister Modi to be a founding member of the Infrastructure for Island Resilient States, the IRIS, and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the CDRI. We are deeply appreciative of India's global advocacy and leadership on matters affecting developing countries. Prime Minister, you can rely on Jamaica's continued support and active engagement on these initiatives, as well as in the context of the International Solar Alliance. Ladies and gentlemen, Jamaica-India relations are buttressed by our shared passion for sports, in particular the game of cricket. We commend India as a leading innovator in the sport, and we appreciate all that India has done to support the ongoing development of cricket in CARICOM and in Jamaica in particular. Of course, Jamaica's excellence in the track and field and India's excellence and prowess in cricket are winning combinations and provide tremendous opportunities for mutual exchange and cooperation. So on that note, I congratulate India on its victory in the 2024 Men's T20 World Cup held in the West Indies in June, and its recent gold medal sweep in the 45th FIDE Chess Olympiad last month. In our meeting, we also discussed collaboration in the creative industries. Jamaica recently established a film fund which signals the government's intent to support filmmakers in Jamaica. We acknowledge the tremendous success of Bollywood, and we look forward to collaboration between the Indian film industry and hundreds of filmmakers in Jamaica. Tourism offers additional avenues for enhancement of the people-to-people connections, with India identified as a key source market for Jamaica. With our picturesque landscape, pristine beaches, and vibrant culture,
Jamaica offers the perfect retreat for the discerning Indian traveler seeking adventure and diverse experiences. I believe that our historical connections provide the scope for greater engagement between our peoples in this area. Furthermore, Jamaica's strategic geographical location presents an ideal foundation for collaboration with India's world-class expertise in healthcare and cutting-edge health technology. This partnership holds immense potential for the development of a thriving medical tourism sector. Congratulations to the Government of India on the construction of a new Parliament building, which reflects the aspirations and dreams of 1.4 billion Indians. And it is quite fitting for the world's largest democracy. As the Government of India prepares to replicate this, as the Government of Jamaica prepares to replicate this remarkable feat, I am looking forward to the opportunity to tour the new home of India's legislature during my visit. As strong democracies, our engagement at the regional and multilateral levels has also been robust, including within the context of the Caribbean community and within multilateral spheres. India's leadership is always present. We share views on the reform of the United Nations, in particular the Security Council, to ensure that its composition is reflective of the current balance of power and the emergence of new leaders like India. India's belief in multilateralism that works for all countries was reaffirmed in its Voice of the Global South series of summits during India's presidency of the G20. The mantra, one Earth, one family, one future, and the inclusive language of the Global South continues to resonate widely. We're confident that India will continue to be a voice of reason as it seeks to fulfill its mission of a more equitable, prosperous, and peaceful world. It is within this context that I am pleased to confirm that Jamaica will support India's candidature for the UN Security Council for the period 2028 to 2029. Ladies and gentlemen, my visit to India has given me a renewed appreciation of the strength, resilience, and generosity of the Indian people. I look forward to deepening our partnership and strengthening our cooperation in the years ahead. I thank you. Thank you, sir. With this, we conclude the press statements. Ladies and gentlemen, please be seated as the two Prime Ministers exit the room. तो भारत और जमैका के बीच आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लेकर के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए और एमओयू का आदान प्रदान किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के डीएनए में बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड है, ना रिलीजियस डिवाइड है यहाँ पे, ना यहाँ कास्टिज्म है, ना यहाँ पे ग्राउंड पे आपको दिखेगा कि छुआछात है या ये दलित वर्ड तो हमने सुना ही नहीं था। इट केम फ्रॉम मीडिया टू जम्मू एंड कश्मीर। हमें ये भी नहीं पता था हिंदू मुस्लिम कौन होता है, हमें ये भी नहीं पता सिख हमारे से अलग कैसे होते हैं। ये जो बात कर रहे हैं ना, वो असल जम्मू कश्मीर, और जो पार्लियामेंट में जो लोग हमारे लिए डिसीजन लेते हैं ना, वो जम्मू कश्मीर के बारे में एबीसी भी नहीं जानते। जो हकीकत है ना, वो हिंदू मुसलमान नहीं है। जब हम लोग अपनी विल से यूनियन ऑफ इंडिया में जुड़े तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जोड़ा ना, मुसलमान था।
महाराजा हरि सिंह बिल्कुल तैयार थे कि जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट थी, इंडिपेंडेंट कंट्री बननी चाहिए। उनकी कैबिनेट में मंत्री कौन थे जिन्होंने उनको मजबूर किया कि आपको यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं जाना है? वो थे रामचंद्र काक, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो हिंदू थे ना, तो शेख अब्दुल्ला साहब जेल में थे क्योंकि वो कहते थे हम यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जाएंगे, हमको डेमोक्रेसी चाहिए। महाराजा और उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते थे डेमोक्रेसी। मोस्ट रिसोर्सफुल स्टेट है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का 1975 का लाल चौक का आपको एक भाषण मिलेगा नेट पे। वो कह रहा है कि पाकिस्तान की नजर हमारे जंगलों पे है। इट इज द मोर रिसोर्सफुल पर्सन। 5 दरिया यहाँ से गुजर रहे हैं, व्हाइट वाटर प्रॉब्लम सारी यहाँ पे है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वाटर इज द बिगेस्ट रिसोर्स राइट नाउ। अंग्रेजों की चाल थी कि ये किसी तरीके से डिस्प्यूट रहे, नहीं तो ये सीधे यूरोप को कनेक्ट करेंगे प्रोडक्शन। आज हम शिकार है मिस गवर्नेंस का। ये हम रोडें देख रहे हैं ना, इस रोड की सच्चाई है कि ये रेजिडेंशियल यूज है और यहाँ पे पैसा कमर्शियल लगाया गया क्योंकि गवर्नेंस गलत हुई है यहाँ पे। ये एनवायरमेंट सेंसिटिव स्टेट है, इसको आप कंक्रीट जंगल नहीं बना सकते। 87 का इलेक्शन ट्रिगर नहीं था, ट्रिगर था 84 में बना हुआ ISI का ऑपरेशन टोपैक। ऑपरेशन टोपैक क्या था कि हमने बाहर से लोग भेजने हैं और एक अंदर से इंसर्जेंसी खड़ी करनी है। मैं अनंतनाग का रहने वाला हूँ, हमारी दुकानें और घर 86 में ही लूटे गए। क्यों? वो एक ट्रायल था उसका, ऑपरेशन टोपैक का। जब महाराजा हरि सिंह जी यहाँ पर थे ना, तब एक सर्वे किया गया था कि जम्मू कश्मीर में वाटर बॉडी से जो दरिया निकल रहे हैं उनमें से कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। वो थी 50,000 मेगावाट। मेरे ख्याल से दिल्ली जैसे 10 शहर। और आप सोचो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। और जब पहली बार कहा गया ना कि कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा, वो इसलिए कहा गया कि एक हमारे यहाँ मोहम्मद सादिक आए थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने NHPC के साथ एक ना समझौता कर लिया कि दरिया हमारा, प्रोजेक्ट तुम लगाओ, जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, उसके बाद जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो सारी की सारी तुम ले जाओ। और जो 42% जो सेंट्रल ग्रांट हमें मिल रही है ना, वो खैरात नहीं मिल रही है, वो हमारे रिसोर्सेज की लूट की एवज से में मिल रही है। आपके माध्यम से उनको समझाना चाहता हूँ कि आप बैठिए जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ बैठिए, ना कि किसी सेंट्रल एजेंसी के साथ बैठिए, ना किसी सत्ता के दलाल के साथ बैठिए। जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ बात कीजिए। 5 साल में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को इतना देगा कि हिंदुस्तान $6 ट्रिलियन की नेशन बन जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग जम्मू के गोल मार्केट में हैं। अप्सरा रोड गोल मार्केट में है। पीछे जो जलेबी है वो बहुत फेमस है, मुझे लोगों ने ऐसा बताया है। और यहाँ पे ये मार्केट ऐसा है कि मतलब हार्ट ऑफ द सिटी समझ लीजिए। काम की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस मार्केट में। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव लगभग आ चुका है, एक आध दिन और फिर हम आपको ललन टॉप स्टूडियो से मिला करेंगे हम सभी लोग आपको। अब हम लोग इस बातचीत को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इस बातचीत में कि जम्मू और कश्मीर में इतना डिवाइड क्यों दिखाई देता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे स्थानीय स्तर पे काम धाम भी करते हैं, थोड़ी पॉलिटिक्स भी करते हैं, कुछ लोग थोड़ी पत्रकारिता भी करते हैं और कुछ लोग हैं जो आम जनता का जीवन बिताते हैं। आते जाते जुड़ते रहेंगे, देखते हैं बातचीत में क्या रंग निकलता है। इनका नाम मुझे बस इन तीनों लोगों में सबसे अच्छे से इनका नाम याद हुआ है क्योंकि इनका नाम राजा भैया है। और मुझे इसलिए नाम हुआ है क्योंकि यूपी में एक पॉलिटिशियन है राजा भैया। आप जानते हैं उनको? बिल्कुल जानता हूँ जी उनको। इसलिए क्लिक कर जाता है ना क्योंकि आप एक जाना पहचाना नाम से क्लिक कर रहा है। अच्छा, लेकिन पहले इनका नाम रखा था हमने राजा भैया, पहले ये थे। नहीं, पहले राजा भैया ये थे, फिर वो बने। पहले वो थे जी, पहले वो थे। नहीं, पहले वो थे। वो डर क्यों बोल रहे हैं पहले वो थे? हमसे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं। वो पहले वो थे, हम बाद में आए हैं। अच्छा जी, पहले वो थे। जी। ये बताइए कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जम्मू के रीजन में बात करते हैं, कश्मीर तो हो गया, जम्मू के रीजन में कैसा कोई बाहुबली